everyone, welcome back to our channel Dentistry to the Point. This is Dr. Dhrumil Manek. So in this video we are going to study about a topic from the subject of general medicine, that is renal failure. Now in simple terms अगर मैं आपको बताऊं कि renal failure, what is renal failure? तो loss of renal function. जो भी renal function है, that is formation of urine and excretion of यूरिया एंड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, दैट इज स्टॉप. वो जो भी फंक्शन नॉर्मली हो रहा था, नाउ दैट इज नॉट कंटिन्यूइंग नॉर्मली. सो दैट कैन बी ऑफ टू पैटर्न. फर्स्टली रीनल फेलियर इज डिस्टर्बेंस और डिटोरिएशन इन रीनल फंक्शन दैट विल लीड टू डिक्रीज इन जीएफआर. ऑब्वियसली अगर रीनल फंक्शन सही से नहीं होगा, देन द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पासिंग थ्रू द glomerulus is going to decrease by many reasons. We'll discuss about them also. So GFR क्या होगा? Glomerular filtration rate is going to decrease. In turn, that will lead to rise in urea and non-nitrogenous substances in blood. जो भी substances excrete होने वाले थे, that substances are going to maintain or be preserved in the blood, which will lead to renal failure, right? So this is overall clinical picture or a basic overview of renal failure कि renal function डिस्टर्ब हो गया, उसके कारण जीएफआर इंक्रीज होगा, सॉरी नॉट इंक्रीज, डिक्रीज होगा, एंड राइज इन यूरिया एंड नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस. किसमें? ब्लड में. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीनल फेलियर. फर्स्ट इज एक्यूट रीनल फेलियर और सेकंड इज क्रोनिक रीनल फेलियर. नाउ व्हाट इज एक्यूट रीनल फेलियर? एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होगा? देयर विल बी सडन, मतलब एक्यूट व्हिच इज समथिंग अकरिंग वेरी suddenly, reversible. If it is occurring very suddenly and it is fast, then it is going to be at a minor level. So it is going to be reversible deterioration of renal function over days or weeks. मतलब ये चीज होगी जल्दी, that is sudden onset होगा, but it can be reversed back to normal condition. But regarding chronic renal failure अगर अपन discuss करें तो it is not going to be sudden. It is going to be after a long time or due to some underlying cause which is present from long time. It is going to be mostly irreversible deterioration of renal function over day, months or years. You can say this is for days or weeks, then this is going to be for weeks or months or years. There will be rapid rise in blood urea because there will not be proper excretion of urea into the urine. So this is introduction. Now what are the causes of renal failure? तीन जगह से हो सकता है renal failure. या तो प्री रीनल, that is ग्लोमेरुलस या किडनी में एंटर होने से पहले ही कोई प्रॉब्लम है, या तो एंटर होने के बाद, दैट इज इंटररीनल. फर्स्ट इज क्या है? प्री रीनल, बिफोर एंटरिंग द रीनल. सेकंड इज इंट्रारीनल, दैट इज आफ्टर एंटरिंग द रीनल. एंड थर्ड इज आफ्टर गेटिंग एग्जिट फ्रॉम द किडनीज एंड व्हेन द यूरिन और द ब्लड इज गोइंग टू फ्लो आउट, द सब्सटेंसेस व्हिच आर टू बी एक्सक्रीटेड, उधर एंड में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव, दैट इज पोस्ट रीनल. So, ये तीनों के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? लेट्स सी. सो प्री रीनल, दैट इज अगर कोई भी चीज रीनल में एंटर ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली जीएफआर इज गोइंग टू डिक्रीज. अगर ब्लड रीनल तक या किडनीज तक या ग्लोमेरुलस तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी रीनल हाइपोपरफ्यूजन. देयर विल नॉट बी प्रॉपर परफ्यूजन ऑफ द रीनल किडनीज. तो उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? देयर इज हेमरेज, देयर इज सीवियर ब्लड लॉस ड्यू टू बर्न्स, एनी क्रशिंग इंजुरी, shock, hypovolemic shock or septicemia, cardiac failure, hemolysis, that is intravenous or pancreatitis. So these are the various causes. मतलब you just need to remember कि there is acute blood loss or major blood loss which has occurred, which is not allowing the proper perfusion of the kidneys. This is in turn decreasing the glomerular filtration rate and increasing the यूरिया एंड नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस. ये चीज याद रखना है आपको बार बार, ठीक है? सो दिस इज प्री रीनल. नेक्स्ट इज इंट्रारीनल. क्या हो गया? नाउ इंट्रारीनल इज गोइंग टू हैव वेरियस कॉजेस लाइक इंट्रिंसिक रीनल डिजीज. पहले से ही कोई रीनल डिजीज प्रेजेंट है, सो ड्यू टू दैट देयर विल बी नॉट प्रॉपर फंक्शन ऑफ द किडनीज. दैट विल बी लाइक वैस्कुलाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स, देन रीनोवैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन, rapidly progressive glomerulonephritis, microangiopathic hemolytic states. So these are intrarenal causes like vasculitis, कोई भी vessel, small या large vessel, उसमें inflammation हो गया, या तो renovascular obstruction है, जो renal की जो vessels है उनका obstruction हो गया, और the patient is previously having rapidly progressive glomerulonephritis और microangiopathic, small जो छोटी छोटी vessels रहती है उनका
उनमें से blood या RBCs are going to get lysed or they are going to get out of that vessels. Microangiopathic hemolytic states. And the last is obstructive. Now obstructive, that is after the blood or the substances are moving out of the kidneys and they are getting obstructed somewhere in the urinary tract. So urinary tract obstruction at any site, that can be due to stone, any tumor or pancreas का enlargement हो सकता है. So these are now last is obstruction. So obstruction is going to have somewhere after the blood or the substances are exited or they are coming out of the kidneys and they are going to get excreted. तो उस जगह पे कहीं भी urinary tract में obstruction है. There is any obstruction seen at the urinary tract due to kidney stones or you can say tumor or due to any prostatic enlargement. So it can also decrease the urine outflow. So this is the causes of renal failure, that is pre-renal, intrarenal and obstructive. I hope so you guys have understood the concept. Now next moving on to the clinical features of acute renal failure. हमने causes discuss किए थे. The causes were discussed in 3 different parts, that was pre-renal, intrarenal or post-renal. So in the same way we'll discuss the clinical features also. Firstly, we'll discuss this clinical features only into 2 parts, that is pre-renal and intrarenal. So starting with the pre-renal. So in pre-renal हमने discuss किया था कि there are various causes for pre-renal acute failure, that is decrease in the blood supply to the kidneys or the glomerulus. Blood supply या blood flow कम हो जाएगा, that means the glomerular filtration rate is going to decrease. In turn, urine output is going to decrease. Now there were various causes of depletion in the blood flow. We are not going to discuss that. So starting with the clinical features. So the patient who is showing the signs of pre-renal acute failure will have no history of pre-existing renal disease. उसको कोई भी history नहीं रहेगी, उसको पहले कोई pre-renal existing renal disease थी इस चीज के होने से पहले. He will present with oliguria or after some time if the conditions are more severe, he may also present with anuria. Now what is oliguria? I hope you guys know oliguria is decrease in the excretion of urine, that is total amount of urine which is excreted will be less than the normal count. Next, uremia and anuria is there is total loss of excretion of urine. Next is uremia. Now what is uremia? That is increase in the blood urea and nitrogenous substances. देखो urine का excretion नहीं हो रहा, that is urine is not produced, or if it is produced it is not excreted properly. तो अगर ये urine excrete नहीं होगा, then urea and various nitrogenous substances, the acidic compounds जो भी excrete होने चाहिए बाहर, that are not excreted. So in that case uremia is going to occur, right? Rapid rise in blood urea and creatinine. Even the creatinine is going to increase. Next is urine osmolality, that is amount of acidity of urine, that is the एक solution में कितने solute के particles है, that is known as osmolality. So their osmolality is going to be more than 600 milliosmoles per liter, because all the acidic compounds are going to be present in the body itself. Urinary sodium excretion is also going to decrease, that will be less than 20 millimole per liter. So these are the various clinical features in regard to pre-renal. आपको याद रखना है कि उसको कोई pre-renal existing disorder नहीं था. Along with that oliguria, anuria ये भी हो सकता है, और he may also present, he is going to present with uremia, increase in the serum creatinine, urine osmolality. So all the things are interrelated. If एक एक चीज को आप dots को connect करते जाओगे, then it will be easy for you to remember the clinical features. Next, treatment regarding this, that is pre-renal. तो क्या करोगे आप? Underlying cause क्या है आपका? कि आपका volume of blood जो है या total blood का volume है वो decrease हो गया है. It is not proper due to any of the cause, that is accident, injury or shock. So treatment of underlying cause, that is volume depletion or septicemia. जो भी problem है उसको सबसे पहले ठीक करो. So if the problem is going to get corrected, then automatically GFR will increase and urine production is going to start. क्योंकि problem pre-renal है, renal के पहले की problem है, तो it can be cured
इजीली रिस्टोर द सर्कुलेशन, दैट इज या तो आप ब्लड से रिस्टोर करो, प्लाज्मा से या फ्लूइड से रिस्टोर करो, देन यू विल हैव अ नॉर्मल कंडीशन ऑफ द पेशेंट. सो दिस वाज अबाउट प्री रीनल. नाउ नेक्स्ट इज इंट्रारीनल. इंट्रारीनल क्या है कि रीनल के अंदर कोई भी कॉज है दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द renal output and lead to acute renal failure. That can be due to ischemia, bacterial toxins, drugs, or previous any infection or inflammation, that is acute glomerulonephritis you can say, or interstitial nephritis. These are the various causes which are going to be present intrarenal. We have discussed about that. Now there are going to be three factors which are going to be responsible for this. सबसे पहले तो increase intrarenal vasoconstriction, मतलब vasoconstriction increase होगा, dilatation decrease हो जाएगा, right? So there will be not proper outflow of the blood and urine outside the body. Tissue cell injury क्या होगा कि अगर इस्चेमिया या बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के कारण होगा तो ट्यूबुलर एपिथेलियम जो होगा उसके जो सेल्स होंगे उनको ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिलेगा. ड्यू टू दैट that cells of that tubular epithelium are going to undergo necrosis and tissue cell injury हो जाएगी. Now these cells have the capacity to regenerate or recover by themselves. जैसे ही blood flow और उनको nutrients या oxygen मिलने लगेगा, they are going to get again recovered. So that is recovery phase. तो तीन चीजें कॉमन हो जाएगी. फर्स्ट, इंक्रीज इंट्रारेनल वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, सो ब्लड फ्लो विल नॉट बी प्रॉपर, डायलेटेशन कम होगा, कंस्ट्रिक्शन बढ़ेगा. Due to that, there is going to be tissue cell injury. After some time, the cells can also get recovered, right? So these are the three main factors. Now, the intrarenal acute renal failure, जो भी intrarenal type of acute renal failure है, it can also lead to acute tubular necrosis, right? Because the cells जो भी है tubular epithelium के, they are going to undergo necrosis. So the condition can also be developed or can be said as acute tubular necrosis. अब इसके तीन फेज रहेंगे, राइट? फर्स्ट विल बी योर ओलिगुरिक फेज, सेकेंड इज योर डायूरेटिक फेज एंड थर्ड इज योर रिकवरी फेज. तीनों फेज क्या होंगे? ओलिगुरिक, डायूरेटिक एंड रिकवरी. तो ओलिगुरिक फेज में क्या होगा? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है कि ओलिगुरिक फेज में द आउटफ्लो ऑफ यूरिन इज गोइंग टू डिक्रीज फॉर सम डेज, राइट? So there will be less than 500 ml of urine per day. That means oliguria की condition develop होगी. The urine is going to contain RBC, that is excretion of red blood cells, WBC, that is white blood cells, and you can also see WBC, RBC cast in the microscopic section, right? RBC cast क्या होंगे? Collection of red blood cells seen microscopically, that indicates that bleeding is also occurring at microscopic level. Specific gravity कितनी हो जाएगी? 1.010. Now this phase is going to last for 10 to 14 days. कितने दिन चलेगा ये फेज? 10 से 14 दिन तक चलेगा. And symptoms and signs of uremia also seen. I have already explained uremia क्या है. Blood urea और nitrogenous substances बढ़ जाएंगे, right? So symptoms and signs of uremia. So this is oliguric phase, which will last for 10 to 14 days. In this phase, the patient may develop hyperkalemia, right? Hyperkalemia मतलब increase in the potassium. देखो यूरिन बाहर नहीं निकल रहा तो पोटेशियम बढ़ेगा. Pulmonary edema can also be occurred. Metabolic acidosis, जो भी एसिडिक कंटेंट से, कंस्टिट्यूएंट से, इलेक्ट्रोलाइट से जिनको एक्सक्रीट हो जाना चाहिए वो एक्सक्रीट नहीं हो रहे, so that will lead to metabolic acidosis और infections can also be seen. So this is your oliguric phase. अब इसके बाद क्या होगा? थोड़े टाइम बाद the patient is suddenly going to start excreting large amount of fluid from the body, that is 3 to 5 liters of urine is excreted per day, and this phase is going to last for 3 to 5 days. So after 10 to 14 days, 3 से 5 दिन तक there will be 3 to 5 liters of urine excretion per day. तो इस फेज को क्या कहोगे आप? डायूरेटिक फेज, मतलब बहुत सारा फ्लूइड बाहर निकल रहा है. तो इसके कारण पेशेंट में ऑल्सो डेवलप डिहाइड्रेशन, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया. पहले हाइपरकैलेमिया था, मतलब पोटेशियम ज्यादा था, नाइट्रोजन भी ज्यादा था, फ्लूइड भी ज्यादा था. फिर ये सब चीजें एक्सक्रीट होने लगी इन मोर अमाउंट, तो क्या हो गया? डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, हाइपोनाइट्रेमिया मतलब कम हो गया, या हाइपोकैलेमिया कैन ऑल्सो बी सीन. सो इसको ठीक करने के लिए आपको फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है. यू नीड टू रिप्लेस द फ्लूइड्स रेगुलरली टू maintain the condition of the patient. Now the last phase is your recovery phase.
अब रिकवरी फेज में क्या होगा कि इस फेज में सब चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होती जाएगी. आफ्टर द डाययूरेटिक फेज जो भी रीनल डिसफंक्शन था, ब्लड यूरिया था, सीरम क्रिएटिनिन था और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, these are going to again become normal. So these are the three phases of intrarenal acute renal failure, or you can also call it as acute tubular necrosis. Next we will discuss the treatment modalities for each of the phase, and this will end the topic of acute renal failure. Next, moving on to the treatment for acute renal failure, mainly the intrinsic or intrarenal part, in which we discussed about acute tubular necrosis. So mainly intrarenal के लिए we had three phases, that is कौन से थे? Oliguric phase, then we had diuretic phase, and third was your maintenance phase or recovery phase, right? So उसी हिसाब से we will have treatment modality for each of the phases, because सिम्टम्स और साइंस चेंज होते जाएंगे तो आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस और कंसिडरेशंस भी चेंज होते जाएंगे. तो फर्स्टली वी स्टार्ट विथ ऑलिगोरिक फेज. देखो, कोई भी डिजीज का आपको ट्रीटमेंट या उसका मेडिसिन इनिशिएट या आपको देना है किसी पेशेंट को, तो आपको उसके सिम्टम्स और साइंस पे ध्यान देना चाहिए. तो अपन ने सिम्टम्स और साइंस तो देख लिया, अब उसी सिम्टम्स और साइंस के हिसाब से आपको मेडिसिन या ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना है. So firstly, starting with oliguric phase, so the patient is going to have hyperkalemia. We discussed that the potassium content is going to increase because of oliguric phase. जो भी excrete होना चाहिए वो excrete नहीं होगा, because of that hyperkalemia is going to occur. So we can use insulin and glucose together, right? अब insulin और glucose साथ में क्या करेंगे? They will increase the potassium uptake by the cells. तो जैसे ही potassium uptake increase होगा, there will be reduction in the hyperkalemia. Along with that, calcium gluconate and ion exchange resins can also be used. So this is for hyperkalemia. Next, to find the cause and initiate the treatment. अगर आपको उस treatment का cause पता है, if you know that the patient is having glomerulonephritis or he is having interstitial nephritis or any other disorder, then you just directly treat the cause of the treatment. अगर आप treatment का cause सही कर दोगे तो अपने आप सारी चीजें सही हो जाएगी. Next is hypertension and pulmonary edema. So for hypertension, you are surely going to give antihypertensive drugs. Along with that, salt restriction and diuretics can be given, because this is oliguric phase. तो आपको diuretics भी देने पड़ेंगे. Even renal protection can be initiated by dopamine of 2 to 4 microgram. Now what is renal protection and what is the role of dopamine? जब भी आप किसी पेशेंट को डोपामिन प्रिस्क्राइब करोगे और या फिर उसको डोपामिन दोगे, तो दिस डोपामिन is going to act on the receptors present on the renal tubules and this or renal vasculature, not tubules mainly. तो जो भी renal vasculature है उस पे ये जो डोपामिन 1 receptor है, that will get activated और vasodilation कराएगा उन vasculature का. We discussed that there was vasoconstriction, increased vasoconstriction था, इसलिए फ्लो नहीं हो रहा था. बट इफ वी इंक्रीज द वैसोडाइलेटेशन, देयर आर चांसेस दैट अगेन द ब्लड फ्लो इज मेंटेन्ड और द पेशेंट में रिकवर. सो द डोपामिन इज गोइंग टू एक्ट इन दैट वे फॉर रीनल प्रोटेक्शन. नेक्स्ट इज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, राइट? दिस इज वेरी मच नेसेसरी इन द पेशेंट विथ रीनल फेलियर. जितना भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, जितना भी लॉस हो रहा है, वो आपको मेंटेन करना रहेगा. Along with that, hypercalcemia and hypophosphatemia can also be maintained by diet and calcium supplements for hypercalcemia, and for diet and phosphate binding agents like aluminium oxide. So in some agents you can also maintain hypophosphatemia. So these are the conditions. Next, protein का जो भी loss हो रहा है, there is loss of protein in the urine. So 20 to 40 grams daily can be given. It is enough for the patient to compensate the loss of protein. You are not allowed to give high protein diet, but you can give 20 to 40 grams daily. Liquid glucose or intravenous glucose 10% can also be given if the patient is having vomiting or diarrhea. Infections के cases में you can provide or prescribe antibiotics, but this is on the basis of आप जो भी investigations करोगे. If you have the investigations and you know the particular organism, then you can prescribe antibiotics for that organism. Next is metabolic acidosis. We also discussed that the patient is going to face metabolic
Acidosis because more of acidic constituents in the body, so you can use sodium bicarbonate, that is 50 to 100 milliequivalents per or every 6 hours. So this is about the oliguric phase. Next, moving on to the diuretic phase. तो diuretic phase में क्या था? Fluid और electrolytes का loss हो रहा था. The patient was experiencing more of fluid loss, that is 3 to 5 liters of urine per day was excreted. तो उस urinary और electrolyte का loss maintain करने के लिए आप क्या करोगे? Fluid and electrolyte balance along with glucose and glucose saline can also be given. या तो आप glucose directly दे दो या glucose saline दो. Along with that, average 3 gram of sodium chloride, क्योंकि electrolytes का भी डिसबैलेंस हो रहा है, तो 3 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 2 ग्राम्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी गिवन फॉर एवरी 1 लीटर लॉस ऑफ यूरिन. 70 to 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स कैन आल्सो बी गिवन, क्योंकि इसमें तो ओलिगुरिक फेज था, इसमें प्रोटीन ज्यादा नहीं जा रहे थे, बट इन डायरेटिक फेज more of urine, so more of the proteins will be lost, so you need to compensate that loss of protein. Also along with that, you will also ask the patient कि आप fruit juices consume कीजिए, because you need to compensate the potassium loss. So this is about the diuretic phase. And lastly, recovery phase, we saw that everything is the serum, creatinine, GFR, fluid and electrolyte, hypertension, everything is going to get normal and the patient is going to recover from the condition. So this is all about acute renal failure. I hope so you guys understood the topic. If you have any doubts regarding this or any other topic, please let us know in the comment section. We would be more than happy to help you guys. Thank you.